हमें कैसा पता चले कि ये चीज़ रुकावट बन रही है या ये भी चीज़ रुकावट बन रही है और उस रास्ते में? नहीं, जब पता चल गया कि ये रास्ता अल्लाह को जाता है, उसमें अगर कुछ चीज़ रुकावट है तो फिर शैतानी रुकावट है. Once you discover that a particular path goes towards God, and anything that stops you from proceeding, then that must be from Satan. So we should see constant progress. Yes, constant progress. क्योंकि उसका मतलब ये है सरकार कि उसमें तरक्की होती रहती है. तो फिर वो जो हमें पेशवा होते हैं ना, जो मदद करते हैं, Those spiritual guides that you follow, they will help you. शैतान सताता है, वो मदद करते हैं, फिर सताता है, मदद करते हैं, पहुंच जाता है. इसका continuous progress in the way that Satan prevents you, creates obstacles, and the spiritual guide then tackles with him, and there's a continuous battle, but eventually you get there. The spiritual guide basically keeps an eye on you and helps you, and protects you from Satan. उसका पहला हिस्सा तो सरकार कि हमको पता कैसे चले कि कौन सा रास्ता सही है. मुख्तलिफ लोग बताते हैं कि ये रास्ता अल्लाह को जाता है. वो तो सारे कहते हैं अल्लाह को दिल जाता है. जिसका they all say about the paths that the only way to God is the heart. हर मज़हब कहता है, बेमज़हब भी कहता है, ये दिल का रास्ता अल्लाह. The religious and the non-religious people all said that the only way to God is the heart. So could I build then upon his question and Heather's question about the spiritual guide? Is the spiritual guide different than God, or is God our spiritual guide? That's a good question. ऐसा पूछ रहे हैं कि उनका सवाल करते जो उन्होंने किया और हैदर ने भी जो सवाल किया है उसका अर्थ यह है और ये सवाल कर रही कि जो रूहानी मुर्शिद होते हैं, जो पेशवा होते हैं, उनमें और अल्लाह में क्या फ़र्क है? कि अल्लाह हमारा मुर्शिद है कि वो मुर्शिद हैं? दो अलग चीज़ें, मुर्शिद भी अल्लाह है और अल्लाह भी मुर्शिद है. मुर्शिद जो है ना, वो तुम्हारे दरमियान रहता है. नहीं समझे? अल्लाह उसमें रहता है ना, वो तुमको अल्लाह तक पहुंचाता है. Allah. Shah saying that the spiritual guide is amongst you, and God is in him, and through him you are taken to God. I see. So the spiritual guide is a person, or is like an angel? तो रूहानी जो पेशवा है वो इंसान की तरह या फरिश्ते की तरह? नहीं, वो बाहर से तो इंसान है ना, अंदर से फरिश्ते हैं ना. From the outer appearance is a human being. Okay. Inside is an angel. Okay. I'll repeat that just for the purposes of the record, that the spiritual guides, they are amongst us, they're human beings in outer appearance. But inside them there is God. And therefore we are taken to God through that spiritual guide because God is inside him. So we're guided in that way. वो एक कॉली लगी हुई है ना जिसमें किसकी है, हाथ आ जाओ तो बुत, आगे क्या? हाथ ना आओ तो खुदा हो. हाथ ना आओ तो वो कहते हैं ये अगर तू मेरे हाथ अगर आ भी गया ना, वो कहता है ना, तो एक बुत की शक्ल में आएगा, एक इंसान की शक्ल में आएगा ना. सही. जिसमें फिर तू होगा एक इंसान की शक्ल में, तू मेरे हाथ आएगा. अगर वो इंसान मेरे हाथ ना आया तो फिर तेरा पता ही कोई नहीं तू किधर है. Go ahead. I'll give an example of one poet. He sings a qawwali, sort of a religious hymn type of thing, and the lyrics of that are such that if I cannot contain you within my hands, then basically I haven't found you, referring to God. But if I can find you, if I can catch you, if I can get you, meaning God, then you will come to me in a human form. Basically meaning your spiritual guide is a human being, is a man. And if you can take hold of him, you have found God because God is inside him. And if you haven't found the spiritual guide, if you haven't found that human being, you haven't found God because you haven't found that person within whom is God. Well, I have another question then on this. There are many, and Shahid talk about this, there are many self-appointed teachers who really don't lead anybody anywhere. But when people go there, they experience lots of marvelous, seemingly wonderful things. Okay. But they're really being led astray. Sure. And that the real guides are hidden and few and far between. So if a person is just starting out on this path, then how would they discern that they have come across a false teacher rather than, you know, if they don't know a real teacher? That's a very good question, if I may say so. Again, ऐसे पूछने के
बहुत से ऐसे रूहानी लोग हैं जो पेशवा बने हुए हैं, मुर्शिद बने हुए हैं, टीचर बने हुए हैं और मुंह बोले, और उनके पास कुछ लोग जाते हैं नए लोग तो कुछ तजर्बात भी उनको हो जाते हैं। तो और जो सच्चे लोग हैं सका जो वो बहुत कम है, बहुत कम मिलते हैं और दूर दराज। तो जो नए लोग इस लाइन में आते हैं उनको ये कैसे शनाख्त हो सच्चा कौन है झूठा कौन और कैसे वो मार खाने से बचें। चोर को चोर पहचानता है, इसी तरह नूर को नूर पहचानता है। Just like a thief recognizes a thief, in the same way light recognizes light. जब तेरे अंदर नूर आ जाएगा ना तो फिर नूर के सामने जाएगा ना तो ये तेज हो जाएगा, समझ जाएगा वो। Shas was saying that when that light of God comes inside you, when you will go before a person who, for example, claims to be a spiritual guide or whatever, then if that person has light inside them, then the light will bounce off the light and your heartbeat will go very fast. बस ये निशानी होगी। That's the only way. Light recognizes the light. And the point being made is that you have to create a light inside. You have to find out how that light is created. And this is how it's done, by inner chanting. So we will experience like a quickening. Yes. You know what I mean? Yeah. And so there will be an automatic outflowing of devotion. Yeah. Not just devotion, you'll physically and spiritually feel your chest pounding. Yeah. Your heartbeat will go very fast. Because you will send out light signal, you will receive a light signal. And because of the energy that will be there, it will go very fast. Well, I would also think then, if you have found a real teacher, when the teacher goes away or elsewhere, or you go away or elsewhere, this light will continue with you. It won't just go up, poof. Sure. You know, so it'd be something that would last and not Exactly. just. जैसा भी ये भी पूछ रही हूँ, कह रही हैं कि मैं ये समझती हूँ कि जब वो लाइट आपके अंदर आ जाए और आपको सच्चा जो रूहानी मुर्शिद मिल जाए, मैं समझती हूँ सिर्फ उनकी सोबत में बैठने से नहीं, जब वो दूर हो किसी इलाके में और आप भी उनसे बहुत दूर हो, वो लाइट का रिश्ता और कनेक्शन फिर भी मौजूद होता है, या उसको होना चाहिए। याद करने से होता इसका that is the way, and it is maintained through remembrance. So is it then not true that everyone that has God within them becomes our spiritual teacher, and that God can speak to us not only through our own heart, but through the hearts of everyone that we come in touch with that also has God in their heart? जैसा पूछ रही क्या ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के अंदर नूर आ जाता है तो वो एक मुर्शिद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और उसके अंदर 10 लोगों के अंदर नूर आ गया, अल्लाह उनके अंदर आ गया, पर वो 10 ही उनसे मिल सकती है, उनमें मुर्शिद ना हो, लेकिन जो आम लोग हों जिनके अंदर थोड़ा सा नूर आ गया, थोड़े से नूर से जो थोड़ी मकाम हासिल करेंगे, ज़्यादा हासिल नहीं कर सकेंगे। And the answer to that question is that, for example, if you have 10 people, they all have the light of God inside them or have God inside them. There are two different things which I may add here. The light of God is something else, and God Himself is something else. Those people that only have the light of God inside them, and you receive benevolence from them or receive some instruction from them, and Shah Sahib was saying that there's only a limited amount of benevolence or spiritualism that you will receive from them. You may not progress towards God or achieve everything on that path. But it may nevertheless help you advance towards Right. In the case of a person having God inside them or having just the light. just the light, even. Right. Is that like a beacon? You know, I mean, to direct us perhaps towards God. You know. पूछ रहे हैं अगर वो लोग जिनके अंदर अल्लाह नहीं है लेकिन सिर्फ थोड़ा सा नूर आ गए, उनकी सोबत में बैठने से भी फायदा होता है, तरक्की होती है. Yes, you do receive some benefit from sitting in the company of people who just have light inside them also.